as well. So let me repeat what are the model styles. Model would be of 3 styles. That means 3 different forms in which we can express our model. Model को कैसे express किया जा सकता है? That is called as model style. This is verbal. We can verbally express our model, pictorial, and mathematical. So जब हमने मार्केटिंग एनालिटिक्स का मीनिंग किया था, मॉडल का मतलब समझा था, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था लाइक एडवर्टाइजमेंट. एक एडवर्टाइजमेंट इज रिलेटेड टू सेल्स. तो हमने एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पर लिखी थी सेल्स, यहाँ पर हमने लिखा था टाइम. दैट जैसे ही हम टाइम के साथ एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाते हैं तो हमारी सेल्स बढ़ती हैं, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम द सेल्स स्टार्ट. बिकॉज जब लोग बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एक ही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बार बार आएगी, तो इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. आप सोचते हो कि क्या शायद ये प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, दैट इज व्हाई दे एडवर्टाइजिंग सो हेवीली. सो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम द सेल्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. फिर आप कुछ टाइम के बाद और एडवर्टाइजमेंट करोगे तो सेल्स डिक्रीज होनी शुरू होगी. तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट. सो इफ आई से दैट कि मैं वर्बली कहती हूँ कि अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम with the increase in advertising, the sales increases, but after some point of time, with increase in advertising, the sales decreases. कि initially कुछ time के लिए sales और advertising में positive relationship है, कि advertising increases, sales also increases, but after some point of time, there's an inverse or negative relationship between both of them. So अगर मैं verbally इस चीज को depict करती हूँ, that is called as the verbal model. So if I say advertising has a positive relationship with the sales, or if we say the price has a negative relationship with the sales, price increases, sales decreases, price decreases, sales increases. तो अगर मैं verbally अपनी इस relationship को express करती हूँ, that is called as a verbal model. Okay. So if I simply say that my sales are influenced by advertising, so that is what? That is a verbal model, because this statement is also depicting some relationship. Whenever a relationship is expressed, that is called as model. Next is pictorial model. So now this is called as pictorial model. When we represent our model in terms of charts or graphs, okay, such kind of pictures, that is called as a pictorial model. Right? Then, अब अगर मैं इसको mathematically express करूँ in the form of equation, if I write that sales are function of advertising, मतलब सेल्स एडवर्टाइजिंग से इन्फ्लुएंस होती है. पहले एडवर्टाइजिंग बढ़ाई तो सेल्स बढ़ी, फिर एडवर्टाइजिंग बढ़ाई तो सेल्स कम हुई, तो मतलब दोनों में कुछ रिलेशनशिप है. सो सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजिंग. सो हम कहते हैं सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज़ इट इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो सेल्स वी से इज एफ हियर मींस फंक्शन. Sales is a function of advertising. That means sales is influenced by advertising. Or in other way, we can write it as sales is equals to A plus B plus C. This is another way of writing it, and this is called as regression model. And sales independent variable होता है, वो हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आता है. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो हमेशा हमारे राइट हैंड साइड पर आता है. Sales are a function of advertising. जब भी हम रिग्रेशन मॉडल लिखते हैं, there is one constant, that is alpha, and the beta, that is beta coefficient, क्या represents करता है slope. कि किस तरीके का रिलेशनशिप है. अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो बीटा पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो बीटा नेगेटिव होगा. तो बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि एडवर्टाइजिंग के कितने परसेंट बढ़ने से सेल्स कितने परसेंट बढ़ती है. फिर एडवर्टाइजिंग को हम 10% से बढ़ाते हैं, right? So this model, when it is represented in the form of equation, that is called as a mathematical model. So these are 3 different styles of model: verbal, pictorial, and
Done? Next is model forms. What are different forms of model? कि जो मॉडल है, फॉर्म्स हमें क्या बताती है कि जो वो मॉडल है वो हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. What kind of help that model will provide us? वो हम डिस्कस करते हैं in the model forms. What are the forms of model? So there are basically three forms of model: descriptive, predictive, and normative. ये आई थिंक हमने पहले भी किया था. हमने कहते हैं ना descriptive, predictive, and prescriptive. Prescriptive means normative only. So prescriptive and normative, they are one as the same. So descriptive means when a model describes the relationship, it just describes the characteristics. So अगर मेरी 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, मैं एक एक्सेल फाइल बनाती हूँ, ठीक है, और 30 स्टूडेंट्स सबके नाम लिखती हूँ, सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिखती हूँ, ठीक है, सबके पेरेंट्स के नेम लिखती हूँ, ईमेल आईडीज लिखती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम डिस्क्राइबिंग माय स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय स्टूडेंट्स. सो सच काइंड ऑफ मॉडल जो मेरे डेटा को डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव मॉडल. सो like example has been given over here, like sale is a function of advertising and product features. कि हम लिखते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करती हैं और प्रोडक्ट की फीचर्स पे डिपेंड करती हैं. सो जब मैं अपने हर एक प्रोडक्ट की, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव मॉडल. सो डिस्क्रिप्टिव मॉडल जस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप कि दो या दोनों आइटम्स में क्या रिलेशनशिप है. तो ये मॉडल मुझे बताता है कि सेल्स किस किस पे डिपेंडेंट है, एक एडवर्टाइजमेंट पे, एक फीचर्स पे. सो जितने भी हम डेटा ऐड करते जाएंगे उतने हम वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. So this model simply describes, it is not giving any answer to your question, it is simply describing कि sales किन पे डिपेंडेंट है. Sales is dependent on advertising and features. So this descriptive model क्या है? जो आपके प्रोडक्ट, जो आपके रिलेशनशिप की फीचर्स को डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट इज एज यू कैन सी, नीचे पिक्चर बनी हुई है ना, लाइक सेल्स, इट इज डिपेंडेंट, योर सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन योर एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट फीचर्स. सो सिंपली आप जब लिस्ट कर देते हो, यू जस्ट मेक अ लिस्ट कि आपकी सेल्स किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है. यू से एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस, these are some of the things जिससे मेरी सेल्स इन्फ्लुएंस होती है. दैट इज सिंपली आई एम डिस्क्राइबिंग कि मेरी सेल्स कैसे चेंज होती है. Next is predictive. Predictive क्या होता है? Describing is concerned with the past. Describe आप किसको करोगे? Which is already happened. उसी को describe करोगे. Next is predictive. Predictive model is concerned with the future. Predictive means कि आप future के लिए predict करते हो, ठीक है? That जो आपने relationship describe कर लिया. Descriptive में आपने एक relationship बना लिया. उस relationship को देख के अगर आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करोगे, देन इट बिकम्स अ प्रेडिक्टिव मॉडल. सो अगर मुझे पता चल गया कि सेल्स और एडवर्टाइजिंग आपस में लिंक है, सो इफ आई से दैट व्हाट इफ आई इंक्रीज माय एडवर्टाइजिंग बाय 10%, तो सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज होगी? दैट इज अ प्रेडिक्टिव मॉडल. सो अगर नाउ आई नो दैट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग दे आर रिलेटेड, मैं जानना चाहती हूँ कि 2022 में मैं अपनी सेल्स 10% से बढ़ाऊं, then what will be the increase in my sales? So it gives the answers to questions like what if this happened, तो आगे क्या होगा? Okay. So what if my advertising increased by 10%, मैं advertising में अपना 10% budget increase कर दूँ, तो मेरी sales कितने % से increase होगी? So I know the relationship, again I can predict, because from that relationship मैं future के लिए अपनी sales को predict कर सकती हूँ. That is called as predictive. Next is normative. Normative means prescriptive. So prescriptive, when you go to a doctor, you tell आप अपनी sickness बताते हो that these are the symptoms. I am feeling such kind of things. So what do you prescribe? So you tell your situation. You completely describe your situation. On the basis of your situation, doctor tells you that what is the possible solution, what is the possible treatment, that you can undergo these tests or you can have these medicines. So what does doctor do? He prescribes you. In the similar way, we have a prescriptive model. So prescriptive model हमें बताता है कि if we are given with a particular situation, what should we do?
Like if this is the situation, what should we do? जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे, एक सिमुलेशन एनालिसिस होता है या फिर सिचुएशनल एनालिसिस होता है. उसमें क्या होता है, वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव 3 सिचुएशंस. हर एक सिचुएशन में हमारे पास आंसर आ जाता है. इफ द सिचुएशन इज कि हमारा कंट्री का जीडीपी इतना रहता है तो सेल्स इतनी होंगी, हमारा कंट्री का जीडीपी इतना रहता है तो सेल्स इतनी होगी. अगर हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं, गुड, बैड एंड नॉर्मल, 3 सिनेरियोज हैं, हम तीनों सिनेरियोज में अपनी सेल्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव. Normative means that I will be given with a particular situation. Okay, on the basis of situation, what should I do? Okay, that is called as a normative model or a prescriptive. Right? Any doubt? Okay, so now we have understood the styles of the model and the forms of the model. So, जब हम मॉडल बनाते हैं, we work with the variables. वेरिएबल्स मतलब ये जो भी मैंने मॉडल में लिखा है, ये क्या है, ये सेल्स क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, these are variables. Variable means any number that varies. So sales definitely they vary, they don't remain constant. Advertising expenses also, they don't remain constant, they vary. So variables mean any quantity that changes with time or with change in the circumstances. That is called as variable. Because variable means a quantity जो same नहीं रहती है कभी भी, that keeps on varying. Okay, so for example, here sales and advertising budget, they are the variables. So जो भी हम items के साथ work करेंगे, हम उनको कहेंगे variables. A variable can be of 2 types, independent and dependent. So out of this, sales is definitely the dependent variable, जिसकी value दूसरे variables के ऊपर dependent. And जिनके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, they are called as independent. So here we have sales. Sales is the dependent variable and advertising budget, that's the independent. Now our independent variable could be of further 2 types, controllable and non-controllable. So controllable means जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, like advertising, ये controllable है या non-controllable है? Controllable. Definitely, because company has the power to decide कि advertising में उसने कितना खर्चा करना है. That is controllable. So if we see some other factors, like हम कहते हैं कि हमारी sales customer की age के ऊपर डिपेंड करती है. Is that controllable? You cannot decide the age of the customer. If that is demographics, वो आप नहीं decide कर सकते. You cannot decide कि कौन से age के customers होने चाहिए आपके area में. You cannot decide that. That is uncontrollable. So if I say that my sales are dependent on the customer group, या customer age, okay, so customer age is an independent variable and sales are dependent variable. But customer age is not controllable. वो मैं control नहीं कर सकती. I cannot control कि मेरी class में इसी age के customers होने चाहिए, मेरे area में इसी age के customers. So that is not. So whenever we make a model, there is one dependent variable जो दूसरे के ऊपर dependent होता है, जिसकी value दूसरे के साथ vary करती है. Here we have sales. Sales हो गया, revenue हो गया, profits हो गया. These are usually dependent variables. And independent variable जिसकी value जो है जिसके ऊपर dependent variable की value depend करती है. And they could be controllable, which are controlled by the company, and uncontrollable, which cannot be controlled. Okay. So you can see in your PPT that this is the typical expression of regression model. Regression क्यों मैं यूज करूँ? क्योंकि ये regression सबसे popular model. Models और भी होते हैं. Why I'm constantly talking about regression because it is one of the most popular models. जब भी हम दो या दो साथ आइटम्स की relationship express करते हैं, we can very easily write it in the form of regression. So you can see हम किसी कोई सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पर हम लिखते हैं एडवर्टाइजिंग. So if we say that sales is a function of advertising. So sales is a dependent variable, advertising is an independent
variable is written on the x-axis. And dependent variable is sales, that is written on the y-axis. So if I say that my sales are positively related to advertising, sales बढ़ेंगी, sorry, advertising बढ़ेगी, तो sales बढ़ेगी. So we never start this from here. We always start. If we say that there is a positive relationship between advertising and sales, that means if sales increases, if advertising increases, the sales will also increase. So that means it will be a upward line like this. Now, what is this? When it's a gap which this is called as intercept. That means even if at a zero level of advertising, so आप advertising ना भी करो तो कुछ ना कुछ sales तो होती है ना. Even if you don't advertise at all, there will be some amount of sales. So that is called as intercept. So intercept में क्या है? Advertising आपकी zero है, पर फिर भी आपकी इतनी sales है. This is intercept. इसको कहते हैं alpha. So alpha constant. It always remains constant. इसकी value constant ही रहती है. इसलिए उनको constant भी कहते हैं, alpha भी कहते हैं. This is alpha constant. So we always start a graph from here. वहाँ से हम ऊपर क्यों है? Because हमारा body कहता है that is a positive relationship with advertising. If advertising increases, the sales increases. So that is why हम एक upward line. अब ये line ऐसे जाएगी, ऐसे भी जा सकती है, सारी ऊपर है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है. All are going upwards. तो मैंने ऐसे क्यों बनाई? ये हमारी डिसाइड करता है कि मेरी लाइन ऐसे क्यों बनाई. आपको इक्वेशन भी बता दूं ना, sales is equals to alpha plus beta a. ये बता दूं. अब ये लाइन की डायरेक्शन तो ऊपर है, ये बट इसका एंगल क्या होगा? That is dependent upon my beta. So मेरा बीटा मुझे बताता है कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग 10% से बढ़ाती हूँ तो सेल्स कितनी परसेंट से बढ़ेगी. ज्यादा से भी बढ़ सकती है, कम से भी बढ़ सकती है, सेम से भी बढ़ सकती है. If I increase the advertising by 10%, sales भी 10% से increase होगी. If I increase my advertising by 10%, तो sales मेरी 20% से increase होगी. तो ये ऐसे ऊपर जाएगा. कि advertising से 10% है, पर sales 20% है. तो ये ग्राफ ऐसे, इसकी जो लाइन ऐसे और स्टीप करके ऊपर जाएगी. If I say कि advertising में 10% से बढ़ाती हूँ, पर sales 5% से बढ़ाती हूँ, तो वो जाएगी तो ऊपर ही, क्योंकि sales भी बढ़ रही है. इस तरीके से so it's not parallel, it's still going on. And parallel will be parallel is still going on. So, जो है, what is the proportion of the change? That will be change in advertising. Sales also change. What is the proportion of the change? That is depicted by beta. Okay. So alpha, it is a constant. This is alpha, and beta is slope. This is called as slope. क्या इसको कहते हैं? बीटा कोएफिशिएंट. This is alpha, या हम इसको कहते हैं constant. इसको कहते हैं beta, that is called as slope या फिर beta कोएफिशिएंट. ये क्या बताता है मुझे कि मेरा what is the proportion of change. So इस तरीके से मैं अपने मॉडल को एक्सप्रेस करूंगी. This is my dependent variable. This is my constant. This is slope. This is input. You can also write here plus. ये हर एक के बीच होता है error term. Error term क्या होता है कि जो रिलेशनशिप में कोई कमी आती है उसको दूर कर देती है. That is error term. Yes, students, any doubt here? You can draw also, but otherwise it's given. So this is about the model. We have understood the meaning of model.
forms of model, styles of model, and how the model is expressed. And this is the equation of the model. Now, after understanding model, we will understand what are metrics. We have already understood about the model. Now, next models के साथ साथ हम metrics भी use करते हैं. Okay. So metrics are what? These are the KPIs. So हम कहते हैं key performance indicators. Okay. It's a quantitative data that helps you to diagnose and monitor the situation. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कार व्हील जो होता है उसके सामने आप देखोगे अलग अलग मीटर्स लगे होते हैं, गेजेस लगे होते हैं. ठीक है, वन इज फॉर द पेट्रोल एंड अदर इज फॉर द स्पीड. ठीक है, सो इस तरीके से देन इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक अगर आप बेल्ट नहीं लगाते हो या फिर पेट्रोल कम है, व्हाटएवर, हैंड ब्रेक ऑन है, दरवाजा खुला है, सो दैट विल गिव द इंडिकेटर्स. सो वो क्या है? दैट दे आर मेट्रिक्स. सो दोस indicators that help you to diagnose the situation and monitor the situation. So अगर आप कार की स्पीड बढ़ जाती है, if you see that the limit, कार की स्पीड लिमिट है 60. okay, अगर आप कार चला रहे हो तो आप देखते हो कि स्पीड लिमिट से आपको पता चल जाएगा 70 हो जाती है, तो डेफिनेटली it help you to diagnose that there is some problem, I need to lower down my speed, otherwise there will be a problem. Okay? So ये metrics क्या होते हैं? These are key performance indicators that helps you to diagnose the situation. और अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में आपको हेल्प करता है. आपको सिचुएशन, ये वो फिगर्स है, वो क्वांटिटेटिव डेटा है जो आपको रियल टाइम डेटा देगा और आपको आपकी सिचुएशन को डायग्नोस, सुपरवाइज और उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है. दे आर कॉल्ड एज मेट्रिक्स. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेट्रिक्स? मेट्रिक्स के एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक सेल्स पर चैनल, कॉस्ट पर सेल. सो अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं, मेरे प्रोडक्ट के मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की सेल्स. These could be my metrics of my product. Then what is the purpose of calculating metrics? I need to monitor my situation. I need to diagnose my situation. Okay. And so the purpose of metric is I want to monitor my situation on the real time. And on monitoring, अगर मुझे लगता है कि there is some problem, I can solve that problem. Okay. So by monitoring the situation, I can improve the effectiveness of my marketing campaign. So अगर मुझे लगता है that with increase in my marketing expenses, my sales are not increasing, मुझे metrics से पता चलेगा, वो data से पता चलेगा. So I can take the corrective action. I can improve the effectiveness of my marketing campaigns. So after monitoring the situation, if I see there is some problem, I can take corrective action. So if the speed limit is 60, आपकी limit अगर cross कर जाती है, you reach to 70 or 80, आपको पता चल जाएगा from that meter and you can lower down your speed. It's as simple as that. So you can, it helps you to diagnose the problem and accordingly you can take the corrective action. So for example has been given here that marketing expenses as a percentage of sales. Like आपने decide किया है कि आप कितनी marketing पे खर्चा करोगे? 10%. So this is your policy. आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि आप मार्केटिंग पे हमेशा सेल्स का 10% ही खर्च करोगे. सो एवरी टाइम जब भी आप खर्चोगे, आप उसको कंपेयर कर लोगे सेल्स के साथ. तो अगर आपको लगेगा कि इस टाइम पे कि वो सेल्स का ज्यादा परसेंटेज बन गया, तो आपको डायग्नोस होगा. It's a lot of correction. So accordingly हम इसको then reduce कर सकते हैं. So this is the purpose of metrics. So metrics हमें क्या help करते हैं? Situation को diagnose करते हैं और on the basis of that it helps us in taking the corrective action if it is required. इसे accordingly मैंने आपको example दिया कि marketing अगर 10% है sales का, marketing expenses, तो किसी भी टाइम पे हमें पता चलता है कि अगर हमारे को marketing expenses sales के 10% से ज्यादा हो रहे हैं, we can immediately control them. नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मेट्रिक फैमिलीज. मेट्रिक फैमिलीज मतलब जब आप एक ही तरीके के मेट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप ऑफ मेट्रिक्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर मेट्रिक्स कैलकुलेटेड टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज मेट्रिक फैमिलीज. अब जैसे सेल्स से रिलेटेड मेट्रिक्स क्या हो सकते हैं? इट कुड बी द मेट्रिक्स रिलेटेड टू सेल्स कुड बी sales
per industry, sales per product, sales per month. So these could be the examples. Sales से related सारे metrics जब हम एक ही group में इकट्ठे कर देंगे, that is called as metric family. Okay, so metric family means when all the related metrics they are grouped together. That is metric family. So sales per month या sales per industry, sales per product. तो सारी जो सारे characteristics के basis पे जब हमने sales निकाल ली, that is called as metric family. So एक single sales per industry, that is single metric. जब हमने sales से related सारे metric एक group में इकट्ठे कर लिए, that is metric family. Sales per industry, sales per month, sales per product. तो जब सारे ऐसे related sales से metrics एक ही group में इकट्ठे कर लिए, उसको कहेंगे metric family. और इनमें से एक single वो उसको कहेंगे metric, right? इसी अलग-अलग एग्जांपल दिए हुए हैं. नेक्स्ट होता है metric dashboard. Metric dashboard ये आपके सामने जो बना है. This is metric dashboard, just like your car dashboard. आपका जो कार का डैशबोर्ड होता है स्टीयरिंग के पीछे, उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं. सिंगल मैट्रिक तो नहीं होता, पेट्रोल का भी, स्पीड का भी, एवरीथिंग. सो बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं. जब ऐसे सारे मैट्रिक फैमिली से इकट्ठी कर दी जाती है इन अ पिक्चर फॉर्मेट, दैट इज मेट्रिक डैशबोर्ड. So when the group of metrics in metric families, they are displayed in a graphical form, just like your car dashboard. So अलग-अलग metrics को जब आप graphical form में, picture form में एक ही slide के ऊपर इकट्ठा कर देते हो, that is called as एक ही location के ऊपर इकट्ठा कर देते हो, they are metric dashboard. So as you can see in another picture also, here, this is what अलग-अलग metrics depict किए हुए हैं in one single picture. There has been that world map, उसमें highlight किया हुआ है what they want to highlight. There has been a bar chart, there has been a trend line, okay, line charts हैं. So अलग-अलग metrics एक ही जो है location पे इकट्ठे किए गए हैं and they are displayed in the form of pictures or graphs. That is called as metric dashboard. So in order to remember it, you can remember it by the way of car dashboard. एक और साथ में आगे picture दी है, that is also metric dashboard. So अलग-अलग metrics यहाँ पर इकट्ठे ही एक ही साइड में दिखाए गए. सबसे पहले पाई चार्ट दिखाया गया है, उसमें बताया गया है कि सेल्स फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है. Okay? Then एक सिंगल पाई चार्ट दिखाया गया है जिसमें हर एक स्टाफ की कॉम्पोजिशन बताया कि किस स्टाफ में से कितने इंजीनियर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने असिस्टेंट्स हैं, कितने सीनियर इंजीनियर. देन ऐसी बार चार्ट दिखाया गया रिगार्डिंग मंथली सैलरी कि हर एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी में कितने एम्प्लॉयज फॉल करते हैं. So, इसी तरीके से ये क्या है, these are the metrics of the human resource of the company. कंपनी के एम्प्लॉयज के metrics हैं, उन एम्प्लॉयज की सैलरी के, उनकी बैकग्राउंड के, उनकी क्वालिफिकेशन, सबको जब हम ग्राफिकली एक ही जगह पर डिपिक्ट कर देंगे, that is metric dashboard, right? So this is all about the metrics and the models. So we have